आज सुबह क्लास अनाउंस हुई थी, वो हुई थी इसके सुंदर गोपाल प्रभु की, परंतु उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया तो वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए अभी कक्षा दी जा रही है श्री माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा। आपके जात के हर्ष होगा, आज महाराज का 72nd अपीयरेंस डे सेलिब्रेशन भी है। शाम में 7 बजे से प्रसादम हॉल में प्रोग्राम है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, 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 जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। Is it 220 or 221 that's on the board? 220 is on the board? 221? Let us recite the Guru Parampara Pranams, please. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravane Pracharane Devi Shesha Shanyavade Paskajade Sitarane Om Aginatya Manindasya Gina Gina Shalakaya Chaksuan Militam Gena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Caitanya Tapitam Gena Bhutale Bandeham Sri Guru Sri Jita Parakamanam Sri Gurum Vaishnavanscha Sri Rupam Sagujatam Sahaganana Gunitam Nitam Sam Sajaivam Sadvaitam Savrutam Parijana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sikanatamscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostite Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Nusati Devi Pranamami Haripe Vancha Kalpa Karubascha Kripasindhyo Bevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Purunityananda
Shri Advaita Gadadhar Sivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So this chapter of Chaitanya Charitamrita is describing Mahaprabhu's tour to holy places. ये जो अध्याय है श्री चैतन्य चरितामृत का, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राओं का वर्णन करता है. Apparently, this is a tour of South India. ये दक्षिण भारत की यात्रा है. Correct? Yes. He did very extensive touring in South India. दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत विस्तार से. So, unfortunately, due to the influence of time in Kali Yuga, there's very few South Indians who are still devotees of Chaitanya Mahaprabhu. दुर्भाग्यवश कलयुग में काल के प्रभाव से आज के समय में ऐसे बहुत ही कम भक्त हैं जो दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हों, उनकी आराधना करते हैं. So previously, we were hearing how Mahaprabhu went to 9 temples of Lord Vishnu at Naya Tripati. That's text number 219. पिछले बयानों में हमने देखा कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान विष्णु के 9 मंदिरों में गए, नया त्रिपति नामक स्थान में. On the bank of the river Tamraparni, and after bathing in the river, Lord Chaitanya Mahaprabhu saw the deities with great curiosity and wandered on. महाप्रभु ने नदी में स्नान करने के बाद अत्यंत उत्सुकता से अर्श विग्रह के दर्शन किए और वहां विचरण किए. So, in text number 220, this gives us some context here. After he went to these 9 temples, then Sri Caitanya Mahaprabhu went to a holy place known as Chiyadatala. इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु चियरदला नामक तीर्थ स्थान गए, where he saw the deities of the 2 brothers, Lord Ramachandra and Lakshman. जहां उन्होंने रामचंद्र तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों के अर्श विग्रह दर्शन किए. He then proceeded to Kanchi, where he saw the temple of Lord Shiva. So Prabhupada always describes where these temples are located. Tila Kanchi, or Tinakshi, is about 30 miles northeast of the city of Tirunelveli. Text number 21, we will now chant. Gajendra Mokshana Tirthe, Deki Vishnu Murti. Panagari Tirthe Asi, Dekila Sitapati. Gajendra Mokshana Tirthe, Deki Vishnu Murti. Panagari Tirthe Asi, Dekila Sitapati. And Prabhu, please chant together. You're chanting at one speed and they're chanting at another speed. Together. And I've explained several times that in South India, when they chant mantras, paka, I mean, no mistakes. And they have उसी लय के समान लय में आप सबको गाना है. महाराज अक्सर उदाहरण देते हैं भारत में जो संस्कृत श्लोकों का उच्चारण होता है बहुत ही पक्का होता है. If they heard chanting the way you just chanted, they would completely reject it.
अगर वो जो आप सब यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं उसको सुन ले तो तुरंत उसकी अवहेलना करेंगे. The head Brahman moves his hand just like a Western orchestra conductor. पाश्चात्य देशों में जैसे ऑर्केस्ट्रा के मास्टर होते हैं वो जैसे हैंड मूवमेंट करते हैं तो वैसे दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण हैं श्लोक उच्चारण करते समय भी लाए देते हैं. So let's try it again. तो दोबारा प्रयास करते हैं. आइए. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Bhagavata Tirthe Asi Dekila Sitapati. Much better. Do you hear the difference? Yes. बहुत ही बेहतर था. आपको अंदर सुनाई दिया? अनुभव. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Bhagavata Tirthe Asi Dekila Sitapati. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Next. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Bhagavata Tirthe Asi Dekila Sitapati. Come on, don't skip a beat, keep it up. Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Loudly. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti. Loud. Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Vaishnavis. Now you have to be loud. The Vaishnavis have to be loud. Tell them they have to be loud because they always chant too soft, can't hear what's going on, can't keep the meter. तो महाराज से अनुरोध करें जितने भी लोग उच्चारण कर रहे हैं वो जोर से उच्चारण करें ताकि महाराज को सुनाई दे सके और वो मीटर मेंटेन कर सके. Now keep the meter going. और बीच में रुकना नहीं है, लय नहीं बिगाड़नी, साथ करो. Okay, Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Dekila Sitapati. Gajendra Mokshana Tirthe Deki Vishnu Murti Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. That's it. Panagadi Tirthe Asi Dekila Sitapati. Translation.
Lord Sri Caitanya Mahaprabhu then visited the holy place named Gajendra Mokshana. अनुवाद तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु गजेंद्र मोक्षण नामक तीर्थ स्थान गए, where he went to a temple of Lord Vishnu. जहां उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर देखा। He then came to Panagadi, a holy place where he saw the deities of Lord Ramachandra and Sita. फिर वह पानागढ़ी नामक पवित्र स्थल पर आए, जहां उन्होंने भगवान रामचंद्र तथा सीता जी के अक्ष विग्रह दर्शन किए। So this is definitely South India, because in South India they're very fond of Lord Sri Ramachandra and Sita. तो निश्चित रूप से दक्षिण भारत है, क्योंकि दक्षिण भारत में वहाँ के लोग बहुत शौकीन हैं भगवान रामचंद्र तथा सीता जी। In fact, there are numerous places of pastimes of Sitaram, Lakshman, Hanuman, and the Ram Leela all throughout South India. ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ भगवान रामचंद्र ने अपने परिकर के साथ लीलाएं की। For example, there's one place where there is rock. It's sandstone, it's not hard rock like granite, but there's one place in the ruins of an ancient city where there is rock, where there are holes punched in the rock that were made by the arrows of Lakshman and Lord Ramachandra. तो वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो ऐसे चट्टान ऐसे पत्थर उपलब्ध हैं जिनके अंदर छेद हैं, वो छेद भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण के तीरों से हुए थे। They're now filled with water. और अभी वो जो छिद्र हैं वो जल से। Well, that was the reason they punctured the rock in the first place, was to get some water. और उन्होंने जो वहाँ की चट्टानों में छिद्र किए ही इसलिए थे वहाँ से जल निकालने के लिए। So Srila Prabhupada's purport, Srila Prabhupada Gaudiya. The Gajendra Mokshana temple is sometimes mistaken for a temple of Lord Shiva. कभी-कभी भ्रमवश लोग गजेंद्र मोक्षण मंदिर को शिव मंदिर समझ बैठते हैं। It is about 2 miles south of the city of Kaivera, or Nagarchoil. ये कैवे नगेर कोइल शहर से लगभग 2 मील दक्षिण में है। Actually, the deity is not of Lord Shiva, but of Vishnu. वस्तुतः इसमें जो अक्ष विग्रह हैं वे शिव जी के नहीं अपितु भगवान विष्णु के। Panagadi or Panakudi is about 30 miles south of Tirunelveli. पानागढ़ी या पन्नाकुड़ी तिरुनेलवेली से लगभग 30 मील दक्षिण में है। So 30 miles is how many kilometers? Approximately 40, 42. 70? 40, 42 Maharaj. 40 kilometers south of Tirunelveli. तिरुनेलवेली से लगभग 30 मील दक्षिण में है। Formerly the temple there contained the deity of Sri Ramachandra, but later the devotees of Lord Shiva replaced Lord Ramachandra with the deity of Lord Shiva named Rameshwar or Rama Linga Shiva. पहले यहाँ के मंदिर में श्री रामचंद्र के अक्ष विग्रह थे, किंतु बाद में शैवों ने रामचंद्र के स्थान पर शिव जी का अक्ष विग्रह रख दिया, जिसका नाम रामेश्वर या रामलिंग शिव है। So we see here that sometimes there's a long-standing rivalry between Shaivites and Vaishnavas. तो यहाँ पर देखते हैं जो बहुत काल से वैष्णवों और शिव भक्तों के बीच में एक प्रकार की स्पर्धा चलती आ रही है। Earlier descriptions of the Lord's travels to holy places, he's described how he was going to Shiva temples and converting them to Vaishnavas. So we see here there is sometimes some competition going on. तो हमने पहले के बयानों में पढ़ा कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में शिव मंदिरों में गए, Because शिव उपासकों को वैष्णवों में भी परिवर्तित किया। except for the Vaishnavas, no one can properly explain the relationship between Lord Shiva
and the Supreme Personality of Godhead. They can't properly explain. वैष्णवों के अलावा कोई भी भगवान शिव और परम पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध का सही गणना या तात्पर्य नहीं दे सकता. Oftentimes they confuse that Lord Shiva and Lord Vishnu are identical. That's a fact. They just merge them, you see. अक्सर वो भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं, दोनों को मिला देते हैं. But that's not proper Siddhanta. परंतु ये सही सिद्धांत नहीं है. You know the word Siddhanta, Prabhu? आपको Yes. सिद्धांत का अर्थ पता है प्रभु? It's like milk turned to the curd. He's saying milk turned to the curd. Well, yes, that's the proper, thank you very much. That's the proper understanding, correct. Garibal. आपने उत्तर सही दिया, परंतु महाराज का प्रश्न था सिद्धांत शब्द का क्या अर्थ है? So it's actually a perfect example because dahi is created from milk. तो ये उदाहरण बिल्कुल सही है जो प्रभु ने दिया कि दही दूध से बनती है. In that sense, you could say that dahi or yogurt is an expansion of milk. तो उस संदर्भ में आप कह सकते हैं दही दूध का ही विस्तार है. Yet only a fool will say that they are identical. They're not identical, they have different qualities. परंतु एक मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि दही और दूध बराबर हैं. And one is clearly derived from the other. One is clearly derived from the other. तो निश्चित रूप से दही दूध से ही बनती है. So Lord Shiva, the only proper understanding is that Lord Shiva is a partial expansion, a very partial expansion of Lord Vishnu. तो सही समझ ये है कि जो भगवान शिव हैं वो विष्णु के अंश के रूप में विस्तार है. This is why one must have a bona fide spiritual master. तो इसलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए. There are very few Shaivite temples that you could go to who could even begin to explain accurately the relationship of Lord Vishnu and Lord Shiva. तो आप बहुत ही कम ऐसे शिव मंदिर पाएंगे जहाँ पर जो भक्त हैं वो बिल्कुल सही सिद्धांत प्रस्तुत कर सकें भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच के संबंध. They don't even know that he's Mahajan. उनको ये भी नहीं पता कि भगवान शिव महाजन हैं. Do you know the meaning Mahajan? आपको महाजन का अर्थ पता है? Talk. Yes. Yeah. Come on. No English? He translates, you know. Perfect English speaker. Huh? Perfect English speaker. Talk. There are 12 versions. There are 12 versions. There are 12 versions. He's saying there are 12 Mahajans. Yes, there are 12 Mahajans. I asked for their, how did the subject of Mahajan come up? We're talking about, why did I mention Mahajan all of a sudden? What is the meaning of महाजन? अथॉरिटी है जो सब देखते हैं कि कौन सही. The Vaishnavas answering? You men should be embarrassed. Because Lord Shiva is one of the 12 Mahajans. भगवान शिव 12 महाजनों में से एक है. That Mahajan means the greatest Vaishnava authorities on Krishna consciousness. महाजन का अर्थ है सबसे ऊंचे कृष्ण भक्त जो है. और Whether you want to consider Lord Vishnu the Supreme Personality of Godhead or Adi Dev, तो सभी महाजन भगवान विष्णु को परम पुरुषोत्तम भगवान, or you want to consider Krishna Adi Dev, either way, या फिर कृष्ण आदि देव. Lord Shiva is only a tiny expansion of Lord Vishnu's Shakti, that's all. भगवान शिव विष्णु शक्ति के बहुत छोटे. Not to minimize his position, he's not an ordinary jiva. उनका जो स्थिति है उसका कम मूल्यांकन नहीं कर रहे, उनको कम नहीं कर रहे. So if Lord Shiva is not an ordinary jiva, then what is position, Rupa Sanatan? तो वो जीव तत्व में नहीं आते, वो साधारण जीव की तरह नहीं है.
अगर ऐसा नहीं है तो उनकी सही He is स्थान क्या है between, he is between Vishnu Tattva and Jeev Tattva. Yes, he's between Shiva Tattva and Jiva Tattva. I mean, between Vishnu Tattva and Jiva Tattva. तो वो शिव तत्व है, शिव तत्व विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में स्थित है। So he's in his own category, that is Shiva Tattva. उनका एक अलग ही कैटेगरी है। In between. But he's not to be confused with ordinary jivas. We don't minimize the position of Lord Shiva, not at all. तो हम भगवान शिव की जो स्थिति है उसको कम नहीं करते। उनका निश्चित रूप But से साधारण जीवों के साथ है। frankly, without hearing from a pure devotee or representative of a pure devotee, you cannot understand Lord Shiva. शुद्ध भक्त से सुने बिना या शुद्ध भक्त के प्रतिनिधियों से सुने बिना आप भगवान शिव की स्थिति का सही आंकड़ा नहीं कर सकते। Here in the city of Delhi, there must be hundreds of Shiva temples. दिल्ली शहर में लगभग 100 से अधिक शिव मंदिर होंगे। You go to their top Brahmin priests, my dear sir, can you please tell me about Lord Shiva? आप इन्हीं मंदिर में जाइए और वहाँ के जो सबसे ऊंचे पुजारी हैं उनसे पूछिए Please. क्या भगवान शिव की स्थिति के बारे में समझा सकते हैं? Tell me about the relationship of Lord Shiva and Lord Vishnu. क्या आप मुझे भगवान शिव और भगवान विष्णु के संबंध के बारे में बता सकते हैं? Most probably 99.5% of the time, they're going to say they're one and the same. 99.5% जो पुजारी हैं वो यही कहेंगे कि वो दोनों एक ही हैं। So the answer, if they say they're one and the same, the answer is yes and no. तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो ये सही उत्तर नहीं है। This is why you have to have a bona fide spiritual master. Try to understand. तो प्रमाणित गुरु की आवश्यकता है। Anyone who tries to study the Vedas without a bona fide guru is going to be lost. बिना प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण किए कोई भी वैदिक साहित्यों का अध्ययन करने का प्रयास करता है तो वो निश्चित रूप से भ्रमित हो जाएगा। Because throughout the Shastra, throughout the Vedas and other Shastras, even Puranas, etc., you can find plenty of statements that make it sound as if Lord Shiva and Lord Vishnu are identical. You can find those statements are there in the Shastra. That's why you have to have a guru, a bona fide guru. क्योंकि शास्त्रों में अनेक वैदिक साहित्यों में निश्चित रूप से आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जहाँ पर ये कहा गया है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही हैं। इसको गुरु की आवश्यकता है। Try to understand why the Vedas are structured like that. तो समझने का प्रयास कीजिए कि जो वैदिक साहित्य है वो इस प्रकार से क्यों कहते हैं। They are structured to satisfy the desires of the munis. उनका इस प्रकार से प्रबंध इसलिए किया गया है क्योंकि वो मुनियों की इच्छाओं के संतुष्ट करना चाहते हैं। There are two kinds of munis. दो प्रकार के मुनि होते हैं। Do you know those two kinds of munis? I know Maharaj. Huh? I know one kind of. You know only one kind of muni? Yes, Maharaj. What kind of muni? Last class you've given a definition that Munis say the same thing, but they don't agree each other. Yes, munis don't agree with each other. मुनि आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं होते। The modern academic system is based on muni conception. तो जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो मुनि सिस्टम के आधार पर है। I believe, perhaps maybe in my opinion, my theory, मैं सोचता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे मत पे शायद ऐसे। then you, Dr. Frog, you say, no, your theory is mistaken. और अगर आप ऐसे खूब मेंढक को कहें, नहीं, आपका जो दर्शन है वो गलत है। Well, they may be Nobel Prize laureate. Nobel laureate means big prize winners. हो सकता है उनको नोबेल प्राइज मिला हो। But they are rewarded by the universities, by the academic community. They are rewarding according to what kind of theories they come up with that are unique. परंतु उनको जो पुरस्कार किस प्रकार पे किस आधार पर उनको मिला है, जो बड़े विश्वविद्यालय हैं या ऐसा समाज है एकेडमिक्स का
The universities, आधार पर देते हैं कि कितनी यूनिक थ्योरी वो प्रस्तुत करते हैं। the universities don't actually care इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि उसमें कितना सार है, कितना सब्सटेंस है। वो बस ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी आंकड़ा करें। I don't know about India, but in America, मैं भारत के बारे में नहीं जानता, परंतु अमेरिका में they have a system called publish or perish. उनका एक प्रणाली है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पब्लिश या पेरिश, या प्रकाशित कीजिए या गायब हो जाइए। Do they do that in India also? They do? So publish or perish, that's an actual professional term, you know, I'm not making that up. तो पब्लिश और पेरिश ये वास्तव में एक प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी है। Publish or perish means that if a professor doesn't write a book, put it out on the market and get some acclaim from other munis, तो इसका अर्थ ये है कि अगर कोई प्रोफेसर अपनी खुद की पुस्तक नहीं छापता, मार्केट में बेचने के लिए नहीं डालता और अन्य जो मुनि हैं उनसे वो प्रमाणिकता नहीं प्राप्त करता, he's at risk of being fired. तो एक तरह से उसको That's the perish part of it. नहीं कर पाता, That's the perish part of the formula. तो वो पेरिश पार्ट गायब है। He's a publisher. He's a Muni? He's a scientist. Who are you pointing at? Oh, High class scientist. huh? Published over 5 papers. Nuclear नहीं, Atomic physics. Nuclear physics. He is a scientist, Maharaj. Nuclear physics. He studied nuclear physics. Huh? Nuclear physics scientist. He's a professor? Scientist, Maharaj. Scientist. Yes, Maharaj. Nuclear physics. He studied nuclear physics. Studied which? Nuclear physics. Oh, nuclear physics, ki jaya. Maharaj, he published 5 papers. Really? Yes. Very nice. Have you ever read the chapter in Srimad Bhagavatam called The Calculation of Time According to the Atom? Have you? You've read that chapter in Bhagavatam? You have. So that's a yes? Yes, Maharaj. Congratulations, Haribol. Did you include it in any of the papers that you wrote? They won't get published, Maharaj. Oh, not yet published. Okay, here's a golden opportunity for you to do some Maha preaching without even putting your neck into the noose. He's temple devotee now, Maharaj. Huh? He's temple devotee now. How is the brahmachari? He's what? He wants to join full time, Maharaj. Oh, he wants to join full time. Well, what's the use of writing papers then? He is lifting all cartons of Bhagavad-gita. He is assisting in marathon office. Oh, he's in the marathon office. Bhagavad-gita ki jai. You already have your doctorate degree? Yes, Maharaj. Yes? So we see with the example of Pune and Chaupadi, and now in the West also there are members of the academic community who are devotees. तो आप पाश्चात्य देशों में भी देखते हैं जो एकेडमिक कम्युनिटी के सदस्य कई सारे भक्त हैं। So you're a young person. तो आप युवक हैं। In your lifetime you will see how this academic devotees are spreading all over the world. More and more, actually, as we speak, more and more devotees are getting teaching positions in universities and so forth. तो आप अपने जीवन काल में देखेंगे किस प्रकार से ऐसे भक्त पूरे विश्व भर में फैलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। How many of you know that we have either 2, I think it's 2 or possibly 3, initiated professors at BITS Pilati?
तो आप में से कितनों को पता है कि बिट्स पिलानी में 2 या 3 जो वहाँ शिक्षक हैं वो दीक्षित हैं? How many of you knew that? आप में से कितनों को ये पता था पहले? We knew that. So, Raja Vijay Rajaguyo, you see, this is part of our preaching portfolio. तो ये हमारे प्रचार कार्य क्षेत्र है. To be honest with you, there was a time in the history of our movement when Hare Krishnas were thought of as being spaced out clowns. Now I'm talking about in the West, not India, before the movement came to the West, East. And so, I mean, they weren't very careful to put on a good show, you know. लोग सोचते थे जो हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त हैं वो बिल्कुल हवा में रहते हैं और बिल्कुल जोकर की तरह. You know, might be out on Harinam Sankirtan with one red sock and one blue sock. कि हरिनाम संकीर्तन में भक्त एक लाल जुराब पहनता है. That's not very conducive to gaining reputation. तो वो रेपुटेशन के लिए अच्छी बात नहीं है. I'm exaggerating a bit, but these things did happen, you know. मैं थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ परंतु ऐसे. And when we're chanting on the streets in the West, people used to drive by. तो हम They aren't people. देशों में बाहर संकीर्तन निकाल रहे होते थे तो They're subhuman. They're not even people. तो वहाँ से जो जनसाधारण लोग जा रहे होते They're miserable. They're working like asses just trying to keep a roof over their head and food on the table. तो हम देखे थे कि वो कितने गधों की तरह कार्य कर रहे हैं सिर्फ उनके सर पर छत हो और सामने मेज पर खाना हो. They're drinking wine and smoking cigarettes. शराब पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं. So when they see the devotees joyfully chanting on the streets, और जब वो ऐसे लोग भक्तों को बिल्कुल आनंद में पवित्र नामों का जप करते हुए देखते थे गलियों में, they would become very, very jealous. तो बहुत ज़्यादा द्वेष करना प्रारंभ कर देते हैं. They used to shout, "Get a job!" No, I'm serious. I was there. This is real history of the movement. "Get a job!" they would shout from the car. तो कार से ही चिल्लाते थे, जाओ कोई धंधा ढूंढो, काम करो. Why? Because devotees are happy dancing in the streets, and they're wretchedly miserable working like an ass. Therefore, complete envy. तो क्यों? क्यों भक्त इतने आनंद में हरिनाम संकीर्तन कर रहे होते थे और वो खुद इतने गधों की तरह काम कर करके इतने पीड़ित अवस्था में थे. So now the paradigm has shifted. तो अभी मानसिकता बदल गई है. That is to say, the devotees are becoming placed in the academic community and respected also. कि जो भक्त हैं वो एकेडमिक In Mumbai, Rashraj Prabhu is doing some wonderful work. In fact, at the Juhu temple, there's an institute, a scientific institute there. It's very highly respected, and they are somehow or other licensed in such a way that they're able to give out doctorate degrees from the Bhaktivedanta Institute now in Juhu. तो मुंबई में भक्तिवेदांता इंस्टीट्यूट है और वहाँ इस रसराज को बहुत ही अद्भुत प्रचार कार्य कर रहे हैं. वहाँ पे मंदिर ये जो इंस्टीट्यूट है इससे डॉक्टरेट डिग्री भी प्रदान की जाती है वहाँ के विद्यार्थियों को. And they have customers also. और उनके ग्राहक हैं. That is to say, because Rashraj proudly gave me a tour of his suite of offices at the Juhu temple. इसलिए रसराज प्रभु ने महाराज को व्यक्तिगत रूप से वहाँ के जितने ऑफिसेज हैं उनका टूर दिया था. He introduced me to some of the students, which he's very proud of. उन्होंने महाराज की मुलाकात अपने कुछ विद्यार्थियों से की जिनके Who are बहुत गर्व था. they're doctorate candidates. They're working on their doctorate degree, and somehow or other his institute is empowered to give doctorate degree now. तो उनका जो संस्था है वो डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करता है. Now this is the ways of the future. तो ये भविष्य है. In the meantime, we have to vigorously chant Hare Krishna in the streets और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें तो गलियों में बहुत ही and continue vigorously preaching हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए प्रचार. with the hope that the whole society doesn't collapse. इस आशा के साथ कि पूरा का पूरा समाज ढह ना जाए. I mean, it will collapse, but at least we want to try to get a huge amount of preaching done before the inevitable collapse.
निश्चित रूप से समाज तो ढहेगा ही, परंतु उससे होने से पहले हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और लोगों को बचाया जाए। You might say, why inevitable collapse? तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों समाज ढह जाएगा? Not my opinion. मेरा मत नहीं है। You ever heard that before? Modern society will collapse. You never heard that? You heard it before? Do you know where it comes from? क्या आपको पता है कहाँ पर लिखा है? Comes from Iskcon founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. ये इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के वाक्य हैं। He personally instructed me on this. महाराज कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद ने I asked him, Srila Prabhupada, there's so much prosperity in America. महाराज ने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि अमेरिका में इतना ज़्यादा हम देखते हैं ऐश्वर्य है। I didn't have to spell it out. You could go, for example, to, in the US, you could go to a supermarket. तो मुझे ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं, आप कभी यूएस के सुपरमार्केट में जाइए। Except for the meat department, it's like a heavenly planet. Except for the meat department. The fish stink like anything, you know. But except for the meat department, the store is like a heavenly planet. तो अगर वहाँ पे मीट डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए, बाकी सब जितने जगहें हैं, बिल्कुल स्वर्गलोक की तरह आपको दिखेंगी। Best quality fruits, vegetables, grains, imports from all over the world. वहाँ पे फल, सब्जियाँ, अन्न पूरे विश्व से इंपोर्ट किया जाता है। Box cereals, jams and jellies made with real fruit. तो वहाँ पे जो जैम्स हैं, असली फल से बनाई जाती हैं। And many other things. और ऐसा अन्य बहुत से Whatever you want for the household, they have them in these huge stores. The stores are 5 times larger than this temple room, or 6 times larger, a very large supermarket. तो वहाँ के जो स्टोर्स हैं बहुत बड़े होते हैं, लगभग इस मंदिर कप से 6 गुना बड़े। So I didn't have to spell it out for Srila Prabhupada. He knew what I meant. तो मुझे इतना विस्तार से डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी श्रील प्रभुपाद को, उन्हें पता था कि मैं किस और अंकित कर रहा हूँ। I was thinking of the verse, I was just thinking about it, the verse in Bhagavad-gita, Anad Bhutani, that grains are produced by Jagna. तो मैं भगवद गीता के श्लोक के बारे में विचार कर रहा था, अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि जो अन्न है यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। But I didn't have to spell it out. Prabhupada knew exactly what I was talking about. परंतु मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, प्रभुपाद जानते थे कि मैं क्या अंकित कर रहा हूँ। So I said, Srila Prabhupada, there's so much prosperity in America, मैंने श्रील प्रभुपाद को कहा कि अमेरिका में इतना ऐश्वर्य है, but there's no Jagna to support it. परंतु कोई यज्ञ नहीं है उसको सपोर्ट। So I was thinking of that shloka of Bhagavad-gita, Anad Bhutani. Grains are produced by Jagna. कि जो अन्न है उसके उत्पत्ति Because कैसे होती है? the grains are the root of human society and animal society also. और अन्न जो है मनुष्य और पशु समाज दोनों के आधार हैं। So Prabhupada's answer to me was very ominous. और श्रील प्रभुपाद का उत्तर बहुत ही विस्मित करने वाला था। He told me personally, it will not last. उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे कहा कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, Very soon it will be finished. बहुत ही शीघ्र ये सब समाप्त हो जाएगा। Of course, I asked this question more than 40 years ago, so we don't know. The point is that modern society is on borrowed time. तो बात ये है कि जो आधुनिक समाज है निश्चित रूप से ढह जाएगा। So, in the meantime, there's this saying in the West. It's an American saying, I think. I don't think it's a UK saying. तो अमेरिकी में एक कहावत है अमेरिका में, Make hay while the sun shines. Hay. 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 Hay is what you feed to animals, you know, horses, cows. Hay. Hay. It's a dry grass. You don't know what hay means? I know Maharaj. It's generally, it can be animal food. It can also be grains like wheat. Hay is a type of grain, actually, or type of. In any event, it's a source of nourishment for animals. देखिए when sun shines,
जब तक सूर्य की रोशनी है तब तक एक So it's a saying was generated in the 1800s in the United States. तो 1800 के जो दशक है उसमें ये कहावत बनी थी. So make hay while the sun shines. कि जब तक सूर्य रोशनी है तब तक Means go out and cut your food for the animals, etc. As long as the sun is shining, because if rainy season is coming, you don't want to go out there in the rainy season. So सूर्य की रोशनी है बाहर जाकर अपना जो अन्न है वो फसल काट लीजिए क्योंकि अगर बारिश का मौसम आता है the farmers would feel they were under time restriction. So the sun is shining, great, let's go out and harvest the hay. जब तक सूर्य आकाश में है तो बहुत अच्छा समय है बाहर जाकर फसल काटने के लिए. Do you understand now what hay means? Yes? You translated it for them? Yes, madam. Okay, so everybody knows what hay means now? I don't know if it's technically a grain, but it's used as an animal food for livestock. जो चारा खिलाते हैं पशुओं को. So why I'm saying make hay while the sun shines, why I'm saying that? तो मैं ये कहावत क्यों कह रहा हूँ? Because we have this current facility of technology and mundane education. तो अभी हमारे पास सुविधा है आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसकी और तथाकथित Presently being put to work by devotees. और भक्तगण इसमें उपस्थित हैं. Actually, Prabhupada liked technology. You'll be interested though. He liked technology. वास्तव में श्रीला प्रभुपाद टेक्नोलॉजी को पसंद करते थे. If it was properly utilized. If he saw it as something that could be utilized in Krishna's service, he liked it. अगर वो देखते थे कि इसका इस्तेमाल सही रूप से किया जा रहा है कृष्ण की सेवा में, जब भी वो ऐसा देखते थे कृष्ण सेवा में लगी हुई है तो I'll give you an example. मैं एक उदाहरण दूंगा. In 1969, I was a very new devotee, 1969 में महाराज बता रहे हैं बहुत नए 1 year devotee एक or साल ही हुआ था उन्हें, less than a year. एक साल से भी कम. So, after having seen Srila Prabhupada and becoming thrilled by his ecstatic prem and how it affected me, श्रीला प्रभुपाद के दर्शन करने के बाद और इतना भाव विभोर होने के बाद क्योंकि जब मैंने उनके अंदर प्रेम देखा, I became filled with love for him and a proselytic spirit. तो मैं बहुत ही उनके प्रति प्रेम से उत्प्रोत हो गया और बहुत ही उत्साहित हो गया. I was feeling, oh, my Guru Maharaj is so wonderful that I must try to spread his glories as far as possible. That was my heartfelt feeling. गुरु बहुत ही अद्भुत चरित्र हैं, तो मुझे इनका यश की हर जगह फैलाना चाहिए. So I thought, Krishna gave me an idea, I should try for a radio interview. तो कृष्ण ने मुझे एक आइडिया दिया कि मुझे रेडियो इंटरव्यू के लिए But regular commercial radio, I thought maybe they wouldn't be so interested because they're, too commercial. तो जो साधारणतः कमर्शियल रेडियो प्रोग्राम या एडवर्टाइजमेंट है वो शायद इतने रुचि नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत. But I knew there was an alternative radio station, a non-profit alternative radio station that would play classical Western music and would play debates and seminars on current events and controversial politics, etc. Alternative radio. दूसरे चैनल्स भी स्टेशंस भी हैं It is क्लासिकल म्यूजिक डिबेट्स इस प्रकार की चीजें वो प्ले करते थे. a subscription service. They did not run advertisements. They kept their doors open with subscriptions by selling subscriptions to intellectuals. तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा नहीं कमाते थे, उनका पैसा आता था सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जो भी लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करते थे. So I thought, well, because they are an intellectual alternative radio station, तो मैंने सोचा हाँ वो एक इंटेलेक्चुअल अल्टरनेटिव रेडियो स्टेशन है, maybe they would be interested in a interview of Srila Prabhupada.
शायद वो रुचि रखेंगे श्रील प्रभुपाद के एक इंटरव्यू में। So Krishna gave me an idea. तो कृष्ण ने मुझे ये आइडिया दिया। I called up the radio station मैंने रेडियो स्टेशन कॉल किया। and I said, there's a charismatic Swami from India in the city now. तो मैंने कहा कि बहुत ही अद्भुत स्वामी हैं भारत से शहर में हमारे। If I make a recording of an interview with him, will you play it? अगर मैं उनका इंटरव्यू कोऑर्डिनेट करूं तो क्या आप अपने स्टेशन पे चलाएंगे? They said yes. तो उन्होंने कहा हाँ। I was absolutely thrilled. I'm a new devotee. साइज हो गया मैं नया। Now I'm going to do an interview of Srila Prabhupada and put it on the radio. I was ecstatic. तो मैं श्रील प्रभुपाद का इंटरव्यू करूंगा और वो रेडियो पे चलेगा। So time came. Well, I was a little nervous, actually. Not a little nervous. I was quite nervous. महाराज कह रहे हैं मैं बहुत नर्वस था उस समय। So I consulted with my friend who had brought me to Krishna consciousness. तो मैंने अपने मित्र से परामर्श किया जो मुझे कृष्ण महामृत में लाए थे। He's mentioned in the Lila Amrita. लीलामृत में भी उनका वर्णन आता है। I consulted with him. I said, Prabhu, you know, I'm going to be interviewing Srila Prabhupada, but I'm a little nervous. तो मैंने कहा प्रभु मैं बहुत ही नर्वस हो रहा हूँ कि मैं प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लूँगा। He said, don't worry. He was called Swamiji in those days. तो उस समय हम स्वामी जी बुलाते थे। Swamiji will do most of the talking. चिंता मत करो। So बात तो स्वामी जी करें। I was a little relieved to hear that. तो मैंने ये सुन के मेरे को बहुत आराम मिल गया। His name was Upendra. He's in the Lilamrita. In the Lilamrita. So the day came for me to do the interview, and I was in the room, and maybe it was Prabhupada's apartment. It may have been his apartment. तो वो इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं कमरे में था। शायद वो श्रील प्रभुपाद का कक्ष था। And there was a table about the same height as this table here. तो इसी समान टेबल थी। In America, they're called coffee tables. वहाँ पे कॉफी टेबल कहा जाता है। इसी हाइट की थी। And I took the old, and that's all there was in those days, the old-fashioned, clunky, reel-to-reel tape recorder. तो उस समय जो बिल्कुल ओल्ड फैशन टाइप टेप रिकॉर्डर आता था तो मैंने वो लिया। They were about more than a meter wide. I'm serious. You see, I mean, you're a young tech guy. You can't relate to what I'm saying. I'm telling you what technology was in the 60s. तो 1 मीटर इसकी कम से कम चौड़ाई होती थी। तो A real clunker. The recorder. Reel-to-reel of some kind of magnetic tape. तो वहाँ पे मैग्नेटिक टेप होती थी इस रिकॉर्डर में। Large reels on each side, one winding reel and one giving reel, and it went through the electronic heads on the recorder and on the magnetic tape. Then the sound vibration would be recorded on the magnetic tape. तो बड़ी-बड़ी रील होती थी। एक लपेटता था, एक दूसरा रील देता था। इलेक्ट्रॉनिक हेड्स पर स्थित होते थे। तो जितनी भी मैग्नेटिक टेप पे रिकॉर्ड होती थी। The machine was very heavy, and it was about what is this? 1/4 meter tall. तो जो यंत्र है बहुत भारी था, लगभग So if you listen to the early lectures, 1966-67 in New York, अगर आप पुराने के लेक्चर सुनेंगे जो 1960 के दशक में शुरू that's the kind of recording machine that the lectures and bhajans and kirtan were made on. उसी प्रकार के रिकॉर्डिंग मशीन पे वो रिकॉर्ड हुए प्रभुपाद जी के प्रवचन। Very primitive. So then I was sitting at this table, and I had a machine of this, you could call it primitive recording machine. तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मेरे पास ये मशीन थी। It had a lever on it. In order to turn it on, you move the lever, will go clunk, you know. तो उसके ऊपर एक लीवर होता था, उस मशीन को ऑन करने के लिए वो लीवर को इधर करना पड़ता था। You guys, you tech guys would be bewildered at the mere sight of such a primitive machine. तो आज के समय में आप सब जितने टेक गाइस हैं, ऐसे मशीन के दर्शन मात्र से मोहित हो। So I had it sitting, I had the recorder sitting on the table.
तो टेबल पे कोई मॉडल पड़ा हुआ था। I was waiting for Srila Prabhupada to come in. प्रभुपाद के इंतजार कर रहा था। Suddenly the door opened and Srila Prabhupada came into the room. अचानक दरवाजा खुला, श्रीला प्रभुपाद कक्ष में आए। He spotted the tape recorder on the table. उन्होंने उनकी दृष्टि टेप रिकॉर्डर पे गई। He wanted to know if it was exactly the same as the recorder in New York. तो वो जानना चाहते थे कि न्यूयॉर्क में जो रिकॉर्डर है क्या ये उसी के समान है? It was almost the same machine, maybe a slightly different model, but it looked like the same one he'd been using in New York. But he wanted to verify that it was the same as the one that he was using in New York, or was it different? तो वो लगभग उसी तरह थी, सेम मॉडल, अलग-अलग मॉडल था, सेम प्रकार। So he was interested in technology. वो जानना चाहते थे कि न्यूयॉर्क में जो मशीन यूज कर रहे हैं क्या ये बिल्कुल सेम है? So he got down on his knees and he started playing with the tape recorder. तो वो घुटनों के बल बैठ गए और वो टेप रिकॉर्डर को चेक करने लग गए। Now I'm sitting next to my spiritual master. I'm a very new devotee, but somehow within my heart I had some conception of etiquette. तो हालांकि मैं नया भक्त था, मैं अपने धर्म के गुरु के समय I realized that it was फिर भी मेरे हृदय में कुछ not very appropriate for me to be sitting same level as my guru. तो मुझे लगा कि मैं अपने गुरु के समान स्तर पर किस तरह बैठ सकता हूँ। If I could have, I would have sunk down into a trapdoor in the floor, but that was not an option. तो अगर मेरे को इस सुविधा होती कि Because Prabhupada's down on his knees playing, he's down on his knees playing with the tape recorder, and I'm sitting right next to him. तो अपने घुटनों के बल बैठ कर टेप रिकॉर्डर से कुछ कर रहे हैं। So I felt very awkward with this. तो मैंने प्रणाम किया। My point in telling this story is, of course, it's a nectarine pastime of Srila Prabhupada, तो जो मेरा उद्देश्य था ये लीला बताना but also illustrates that Prabhupada was interested in technology. कि श्रीला प्रभुपाद टेक्नोलॉजी में रुचि रखते थे। He would be interested in the modern computers तो वो आधुनिक कंप्यूटर्स में भी अपने रुचिकर होते how they could be utilized in Krishna service. और उनका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है कृष्ण सेवा में। He would be interested in mobile phones also. और वो मोबाइल फोन में भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। However, he would be very concerned that the devotees, his disciples, did not misuse them. परंतु निश्चित रूप से वो बहुत चिंतित भी होते कि उनके शिष्य इसका गलत उपयोग करते। He would be very concerned about that. वो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत As we should be concerned about that. जिस प्रकार से हमें भी चिंतित होना चाहिए। There are devotees, unfortunately, that do misuse their mobile phones. ऐसे भक्त हैं दुर्भाग्यवश जो मोबाइल फोन का दुरुपयोग करते हैं। Because of the net connection, if they have net subscription, then they become completely distracted by going on YouTube. तो क्योंकि नेट कनेक्शन इतनी आसानी से उपलब्ध है और YouTube पे जाते ही वो भ्रमित हो जाते हैं। Some even fall to the position of looking at pornography. I'm sorry, but this is going on. और कई बार उनका स्तर इतना गिर जाता है कि वो पोर्नोग्राफी जैसे वीडियो भी देखते हैं। So for that reason, Prabhupada would have been very concerned about, he would have been very concerned about the proper use, that these technologies not be misused. तो ये देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है इसका सही उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। So my message to you is, do the most you can with the advantage and talents that Krishna has given you. Use it in Prabhupada's service. You must do that. Your duty is take that full spectrum of talent and credential, use it in Prabhupada's service. Okay, so we'll stop there. Any questions or comments? Okay. Jagaguru Sri Prabhupada ki jai. Granchara Shrimad Chaitanya Charitamrita ki jai. Nitai Gaur Premanande Hare Hare Bolo. उत्सव की श्रीला प्रभुपाद की